नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिसने संगीत को एक नए मायने दी हैं, जिसने संगीत के जरिए अपने जीवन को एक नई दिशा दी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं। जी हां, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 बार ग्रामी पुरस्कार विजेता रिकी केज। इसके साथ साथ आज रंग तरंग में आपको दिखाएंगे कि कैसे देश भर में जश्न आजादी मनाया गया और भी होगी खास पेशकश। तो देर कैसी शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। भारत ने मनाया अपना 77वां स्वाधीनता दिवस और देश भर में सभी डूबे नजर आए जश्न आजादी में। देश भर में ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं इंडिया गेट, जहां पर देश भर से कलाकार जुटे और वहां उन्होंने आजादी के शूरवीरों को, आजादी के गुमनाम नायकों को नमन किया। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले आजादी के योद्धाओं की याद में संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा आयोजित रंग स्वाधीनता 2023 मेरी माटी मेरा देश में कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। रंगारंग प्रस्तुति की शुरुआत देशभक्ति गीत हर घर तिरंगा से हुई, जिसे शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से कथक केंद्र की नृत्यांगनाओं ने बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया। शाम ढलते ढलते आजादी का जश्न परवान चढ़ने लगा। देशभक्ति के रंग में डूबे दर्शक हाथों में तिरंगा ध्वज लिए खासे उत्साहित दिखाई दिए। इस दौरान प्रसिद्ध ड्रम आर्टिस्ट ए शिवमणि ने अपने जोशीले अंदाज में ड्रम और अन्य वाद्य यंत्रों के माध्यम से संगीतमय प्रस्तुति दी, जिस पर दर्शक झूम उठे। स्वाधीनता के रंग से ओतप्रोत दर्शकों ने भारत की विकास यात्रा को याद किया। साथ ही देशभक्ति की अपनी इस भावना को, जोश को डीडी न्यूज के साथ साझा किया। हिंदुस्तानी का होने का गर्व तो शायद यहाँ पर हर एक इंसान बता सकता है कि कितना ज़्यादा गर्व है। मुझे क्या, सबसे आप पूछेंगे तो आज के दिन तो उनको सबसे ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा। हमें एक गर्व फील होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमेशा ये कहना चाहेंगे कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके कर्तव्यों को देखते हुए यहाँ पास ये प्रोग्राम रखा गया। देशभक्ति के तरानों से सजी इस शाम में देशभक्ति के कई रंग दिखाई दिए। लोक और शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से कलाकारों ने नारी सशक्तिकरण, भारत की विकास यात्रा सहित भारत के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत किया, जो हर भारतवासी को गर्व से भर देता है। संध्या शर्मा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको ले चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां स्थित है भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन करता हुआ त्रिवेणी संग्रहालय। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया था कलाकार कैलाश शर्मा का, जिन्होंने लिंग पुराण पर एक चित्रकथा बनाई थी और उस चित्रकथा को अब त्रिवेणी संग्रहालय में रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ अब हमारे देश के 18 मशहूर चित्रकार 18 पुराणों पर विभिन्न शैलियों में चित्रकथा बना रहे हैं, जिन्हें भी त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। उज्जैन में स्थित त्रिवेणी संग्रहालय अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इस संग्रहालय में देश भर की कलाएं, सांस्कृतिक धरोहर आदि का चित्रण देखने को मिलता है। महाकाल लोक के बनने के बाद से उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और यहाँ आने वाले लोग महाकाल लोक के गेट पर ही स्थित इस संग्रहालय में अपने देश की संस्कृति और धरोहर का दर्शन कर सकते हैं। मन की बात के 103वें एपिसोड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय का जिक्र करते हुए कहा
कि उज्जैन में अपनी संस्कृति और विरासत को अंगीकार करने का एक अच्छा प्रयास हो रहा है। यहाँ 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्र कथाएं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बन रहे ये चित्र बूंदी शैली, नाथद्वार शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी 18 विशिष्ट शैलियों में बनेंगे और इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि अब उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को महाकाल लोक के साथ साथ एक और दिव्य स्थान के दर्शन हो सकेंगे। इस संग्रहालय में पूरे भारत की महत्वपूर्ण चित्रकारी यहाँ दर्शाई गई है। यहाँ पर देश की संस्कृति को सहेजने का भी काम किया जा रहा है, तो नई पीढ़ी तक इस विरासत को पहुँचाने का काम भी किया जा रहा है। ये संग्रहालय लुप्त होती परंपराओं को जीवित रखने का एक बड़ा काम कर रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा की जो शैव, शाक्त और वैष्णव धाराएं हैं, उन्हीं तीनों धाराओं पर आधारित चित्र मूर्तियों का संग्रह हमने किया है, जिनका निर्माण पूरे भारत की पारंपरिक चित्र शैलियों में, मूर्ति शैलियों में हमने किया हुआ है। आज लाखों श्रद्धालु उज्जैन आ रहे हैं और इस संग्रहालय को देखने भी आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग अपनी विरासत से रूबरू होते हैं तो इसका फायदा देश की विरासत को सहेजने में मिलता है। जयपुर के प्रख्यात चित्रकार कैलाश शर्मा द्वारा बनाई गई लिंग पुराण पर आधारित पेंटिंग उज्जैन के महालोक परिसर स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में देखी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कैलाश शर्मा की चित्रकारी का जिक्र किया था। देश के प्रख्यात 18 चित्रकार 18 पुराणों पर आधारित चित्रकथा अलग अलग शैलियों में कैनवास पर वाटर कलर से तैयार कर रहे हैं, जो जल्द ही उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएगी। भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन विरासतें हैं, उनका प्रतिबिंब दिखाई भी देता है और कलाकारों के आने से वो निश्चित रूप से एक नए स्वरूप में देश की एकता, अखंडता को बनाए रखते हुए विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति के उन मानक मूल्यों को स्थापित करेगा जिसमें मानवता है, जिसमें प्रेम है, जिसमें सद्भावना है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, जो पूरी वसुधा को कुटुंब मानकर जागृत और जीवित करता है। उज्जैन का ये संग्रहालय भारतीय विरासत को नई पीढ़ी तक नए तरीके से पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो कला और संस्कृति को सहेजने के लिए काम कर रहे लोगों के सम्मान को भी बढ़ाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और अब बारी हमारे आज के खास मेहमान की। आज हमारे साथ जुड़ रहे एक बेहद मशहूर संगीतकार रिकी केज। रिकी को हम ग्रैमी पुरस्कार विजेता के रूप में जानते हैं, लेकिन आज इस खास मुलाकात में हमने उनके जीवन के दूसरे पहलुओं को भी जानने का एक प्रयास किया। कैसे हुई थी रिकी केज की शुरुआत, कैसे पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा उनके दिल के इतने करीब हो गया, और फिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जीवन को दी एक नई दिशा। साथ ही साथ क्यों जनगण मन का ये नया संस्करण हम सभी भारतवासियों के लिए एक बेहद खास होने वाला है। आइए इन तमाम मुद्दों पे करते हैं रिकी से खास मुलाकात। जी हमारे साथ हैं रिकी केज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिकी इस खास पेशकश में हमारे साथ। रिकी को हम ग्रैमी अवार्ड विनर के नाम से जानते हैं और इनके ग्रैमी पुरस्कारों की जो फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी है और इसीलिए इन्हें भारत गौरव के नाम से भी आजकल पुकारा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने नेशनल एंथम को रिक्रिएट किया है वो अपने आप में एक अलग ही इतिहास रच रहा है।
रिकी, यहाँ पर तमाम बड़ी चीज़ें हैं जिन पर हम लगातार बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ आपके जीवन के कुछ और पहलुओं पर ही नज़र डालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और बहुत ही खास मकसद के साथ हैं। सबसे पहले तो उस मकसद के बारे में हम जानना चाहेंगे। I'm here to promote my new version of my national anthem. So it's a beautiful version of it. The national anthem is a song that has been really important for me. The first piece of music that I ever learnt as a child was the Indian national anthem. In fact, the first piece of music that I ever listened to, even before I listened to any nursery rhymes or any lullabies, was basically the Indian national anthem. So it's in my blood. It's a piece of music that I absolutely respect and I adore. So I've made many versions of the national anthem, but this is my epic version with the Royal Philharmonic Orchestra, the largest symphony orchestra to ever record the Indian national anthem. So I'm really excited about it. पर नेशनल एंथम, जिस तरह से हम अपने राष्ट्रगान की बात करते हैं, हर भारतवासी के लिए ये दिल के बहुत करीब है और इसके साथ हमारी बहुत सारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। तो इसको रिक्रिएट करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती था। I guess I'm one of the 1.4 billion people in India who absolutely love the national anthem. So I know how our country loves listening to it, you know. पर थोड़ा मन में डर है इसको रिक्रिएट करने का कुछ? Absolutely not, because I've done many versions of the national anthem in the past, so it's a song that comes very easy to me. It took about 3 months of preparation because it's 100 musicians, so each musician has to be told what to play. So everybody has a sheet in front of them, and and they all play in harmony together, and everybody has to sound like one unit, So that took about 3 months of preparation, and I wanted it to be very dynamic. I wanted some parts of it to be nice and loud and some parts to be soft. So that took a little bit of time. But the recording itself just took about 45 minutes because the musicians are absolutely excellent. You put the sheets in front of them, you play, and the national anthem is less than a minute. So basically, if you do about 5 or 6 rehearsals, that's just 10 minutes. And then after that, we just started recording, and it was very nice. But of course, everybody's going to be seeing it on the video, the performance of the national anthem and the recording. But I was in the room with them while they were performing, and that was absolutely amazing to hear that 100-member British orchestra, and at the end of it, singing Jaya Hai together, and me being an Indian composer conducting them. It was a very, very surreal experience. And of course, I've collaborated with the Royal Philharmonic Orchestra in the past, and they're my favorite orchestra in the world. I've collaborated with many orchestras everywhere in the world. They're my favorite. But the thing is that this particular performance was very special, and I told them that that this is going to be your gift to 1.4 billion people, especially after you've ruled us for over 200 years. So they took that with a lot of encouragement, and they really gave it their very, very best. आज हम ग्रैमी पुरस्कार विजेता के रूप में रिकी केज को जानते हैं, लेकिन शुरुआत एक बहुत ही हम्बल एक रॉक बैंड के साथ हुई थी। आज इतना लंबा सफ़र जब आप तय करते हैं और जब अपने नाम के साथ ग्रैमी पुरस्कार आप जोड़ते हुए देखते हैं, शुरुआती दिनों की अगर आप कुछ बात करें तो क्या कुछ आपकी इस वक्त जो मेमोरीज हैं? Sure, I started off with a rock band, and before that also I was playing with some smaller bands and playing at small venues and things like that. So the rock band was overall a very enjoyable experience. I got to travel the length and breadth of India, few concerts outside of India too, and playing our rock music and having fun with friends. Staying in hotel rooms with like 6 or 7 people in a room and all of that stuff. So all of that was really good fun. And then later on, I moved into doing commercials for television and radio. Okay. So I did a whole lot of those. I did more than 3,500 commercials. I was in fact pretty much the most successful commercial music maker in the whole world, in fact. I was doing between 2 to 3 commercials a day. I had 4 studios where we were constantly working on all of this, working with pretty much every brand on the planet. I did that for about 13 years. And then I started realizing that, these big brands, they understand the power of music. So much so that they're ready to spend so much of money to create the music, to sell a product. Okay. So then I realized that I feel strongly about so many things like the environment and positive social impact. So why can't I use the power of music, And then basically I got that major push from Prime Minister Modi after that. After I won my first Grammy, I had a beautiful meeting with him. And what was supposed to be a 5-minute meeting became an hour-long meeting. And he's the one who encouraged me. He told me that you're so passionate about the environment, I can see that. And then he encouraged me that dedicate your life to this and dedicate your life and your art and your music to this completely. So I remember when I left his office, that is something that I took very seriously. I decided that every piece of music that I'm going to make is going to be about, in my own small way, making this world a better place.
पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें तो वैश्विक मंच पर इस पर लगातार बात हो रही है और भारत ने वैश्विक मंच पर कई ऐसे वादे भी किए हैं जिस पर हम कठोर कदम उठाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि संगीत में वो ताकत है जिससे आप इन तमाम जो हम कठोर कदमों की बात करते हैं या जो ये बहस चिड़ी हुई है उस पर हम किसी भी तरह का कोई भी हम बदलाव ला सकते हैं? Definitely. Now, when we talk about India itself, India in the past, when it came to climate change, when it came to any of these intergovernmental decisions, they were always sitting down in the sidelines, and they were not, part of the discussions. Now things have changed, where India is now not only part of the discussions but taking leadership when it comes to these huge intergovernmental body decisions. In fact, we have the presidency for the UNCCD. We are very actively participating in the COP28 and the COP21. We were pretty much the center of focus for that. Prime Minister Modi launched the Solar Alliance over there, which is such a beautiful alliance of tropical nations for building renewable energy. But what is more important when it comes to music is that Prime Minister Modi has started this thing known as the Life Mission, which is Lifestyles for Environment, which talks about individual action, and that is where music can play a very important role, because everybody talks about changing the world, but people very rarely talk about changing themselves. Yes. And that's not because we are bad people, it's just because we have not been empowered to believe that the small, tiny, incremental changes that we can make within our own lives actually matter, So that is where we need to empower everybody around us to believe that if we make those small changes, that is all that matters. We don't need to try to change the world, we don't need to force the government to make changes and all of that stuff. We just have to make these tiny changes. So everybody is aware of all the problems that we are facing. But how do we convert that awareness into action? And that is where music can be that emotional language that hits the hearts and souls of people, so that people emotionally react to it and they bring about change. तो ये एक पहलू है रिकी का जिसको लेकर वो दुनिया भर में अपनी बात रख रहे हैं कि कैसे पर्यावरण को लेकर हम और भी ज़्यादा संजीदा हो सकते हैं और कदम उठा सकते हैं। लेकिन जब हमारे साथ ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी हैं तो उनके संगीत के बारे में ज़रूर बात करेंगे। रिकी, हम आपके कोलैबोरेशंस की बात करें या आपकी एल्बम्स की बात करें, समसारा या डिवाइन टाइड्स, ग्रैमी अवार्ड मिल गया, एक आपने एक पायदान पर अपने आप को देख रहे हैं इस वक्त। जब आप इस तरह का म्यूज़िक बनाते हैं, क्या सोच के साथ बनाते हैं और क्या वो चीज़ें जो लगातार आपको इंस्पायर करती रहती है? When I stopped doing jingles and I started creating music which was based on my own beliefs, my own personality, my own philosophies, then things changed, because then there was no deadline. Whenever I would feel strongly about something, I would make music on that. Now when it comes to awards itself, awards can always be looked upon in two ways, One is basically vanity, that I won an award, I'm better than everybody else. But that's a wrong way to look at an award. The second way is how I look at it, that my music has got a message which I want to spread further and wider. So basically each and every award is a platform for me to speak up and for more people to take me seriously, and for me to spread my music further and wider. So I believe awards are very important, and I think awards are very, very welcome. But at the same time, the end goal should not be to win an award. The end goal should be creating great music so that people listen to it and people connect with it. But if an award happens, then I'm extremely grateful and happy for it. आप इस तरह की इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करते हैं, आप भारतीय संगीतकारों के साथ भी काम करते हैं। एक बड़ा फ़र्क आपको क्या लगता है दोनों ही शैलियों में, दोनों के काम करने के तरीके में या सोच में, अगर हम जब संगीत बनाते हैं? When it comes to professionalism, it's the same. Between the Western counterparts and an Indian musician, but the style of music is a little different. Like for example, when it comes to our Western counterparts and Western musicians, everybody need everything to be very structured and rehearsed, and and everything needs to be planned and all of that stuff. Whereas when it comes to India, it's completely different. In India, everything is about improvisation and feel. Like for example, if I bring in, let's say, Pandit Vishwamohan Bhatt for a recording, and I've done maybe about 40-50 concerts with him, and I absolutely admire him. So if I bring him into the studio and I give him, like, let's say about 16 bars, like let's say 30 seconds of music, and I tell him play something here, he will never be able to play the same thing twice. Okay. Because based on his mood and based on his expression, and then uske baad when we go to stage, then what will happen is that he will play it completely different, because everything is based on his mood at that particular point in time, and that's the beauty of it. So that is why I love working with Indian classical musicians, simply because if I make a composition and I give it to them and I tell them to play on this, they will take that composition to a whole new level, and they'll take it into places that I could never imagine. So they uplift my music by playing on it because of their life experiences, their music education, their mood, their experience of working with other composers. They use all of that, and they make the composition much better. पूरी दुनिया में आप परफॉर्म करते हैं तो
कोई ऐसा यादगार कॉन्सर्ट? For celebrating 20 years of Kargil Divas on 2019, I had performed in Leh at the Sonam Wangchuk Stadium, and so basically it was a 2-hour concert, me on stage with my musicians, and in front of me 12,000 soldiers wearing uniform. It was, I think, the greatest experience of my life. Mountains all around us, a little less oxygen because it was at an elevation of 12,000 feet. So it was a little difficult, but it was just a mind-blowing experience performing there for India's finest. And the second performance would be my first time that I performed at the United Nations General Assembly for world leaders. So that was in 2016. So that was also amazing. But the lucky thing for me was that we had a rehearsal the previous day. So I could go into that hall and I felt very nervous during the rehearsal. But luckily my nervousness went away because I could spend a day earlier over there and get used to the atmosphere. Because just the thought that every single world leader on this planet has stood on that same stage where I am performing. अगर आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपकी एल्बम बताई जाए, या कोई ऐसा मोमेंट समसारा की बात करें या डिवाइन टाइड्स की बात करें, या कोई ऐसी एल्बम जो आपको लगता है कि हाँ, एक वो बहुत खूबसूरत लम्हा था जो मुझे याद रहेगा और आई ट्रूली डिजर्व द ग्रैमी. Divine Tides was a very beautiful experience of making that particular album, because I'd won my first Grammy in 2015 for Winds of Samsara, and for 7 years I was thinking of making a follow-up to that album. But I was touring so much and I was doing so many concerts, like 70-80 concerts a year. So it was very difficult for me to, to sit down in a very focused manner in the studio and, and create a new piece of music. Then the pandemic came in 2020, and and that presented itself as an opportunity because we were forced to stay indoors. So that's when I started creating the album, and then I thought of going to my my childhood idol, that is Stuart Copeland. 75 million albums sold. He's won 7 Grammy Awards, done 50 Hollywood movie soundtracks. And I grew up literally with his posters on my wall. So I thought, why not reach out to him? At the most, he'll say no. I reached out to him. Luckily, he said yes. 1 year we worked on the album. Hundreds of Zoom calls, messages, emails, Skype calls, video calls, remote recording sessions. We made the album. Album was very successful. We won. We got nominated for the Grammy, and I'd not even met him in person. So that is how the world was, right? I've not even met him, and we've become so close. He's become like an older brother to me. Then finally I met him for the first time just a few days before the Grammy Awards function, hugged each other. That was a very, very emotional moment for me after all we had gone through together and making this album and and doing this together. So that is why that album will always be very special for me. But what really Grammy means to you? Because 3 Grammy Awards, 10 Grammy nominations, and whenever we introduce you, always put this Grammy Award winner. So what exactly this means to you, and what difference it has made in your life? I'm quite proud and humbled to have won the Grammys, because it's said to be the biggest musical honor in the world, and there is nothing above that. So it just feels good to do that, because growing up as a child, the Grammys always felt like an unattainable dream. Like, you can't even dream about it. Forget about unattainable dream. You can't even dream about it. You just watch it on television and that's the end of it. But then having won my first Grammy when I was 33 years old was just amazing, and being the 4th Indian to have won a Grammy, it was just absolutely amazing. But then again, as I said earlier, that one should not take these things in vanity. One should understand that the true work starts after you won the award. And the Grammy goes to Winds of Samsara. I'd like to thank, because once you won the award, you've been given this opportunity, and what are you going to do with this opportunity? So that's what. So for me, it was a great opportunity to spread my message further and wider. It was a great opportunity. In India, we've got a saying called as Vasudhaiva Kutumbakam, which literally means the world is one family. Live in peace with all entities on this planet, whether it is the animals, the wildlife, the forests. Stuart Copeland, Divine Tides, and Ricky Kej. Namaste and thank you. For me to bring about social change, environmental change, and and do all that I can to to make this world more conducive for everyone and everything. So what next? So next I've got, right now of course the national anthem is the most important thing for me to promote and to try to ensure everybody listens to it, because it's a completely self-funded project and there is no entity involved in it. So what I want to do is that I want to, and the reason why I've not involved anybody is that I want this to be a gift to the whole country to use however anybody wants, in whatever manner anybody wants, at events or on their own social media or
wherever. You want to put it on television or anything. So basically it's a free for all, it's a gift for everybody, and I'm hoping that this becomes a definitive version of the national anthem that everybody uses whenever they want to play the national anthem, because it's the constitutional version of 52 seconds, all of that stuff. So that is my aim. And then after this I've got another album with Stuart Copeland, so that's going to be releasing on the 25th of this month. बिल्कुल, तो आज़ादी के अमृतकाल इस वक्त हम मना रहे हैं। किस तरह से 2047 का जो विकसित भारत है उसके निर्माण में हम सभी अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज से यहाँ पर हम बात कर रहे थे, वाकई एक संगीतकार होने के साथ साथ किस तरह से एक नागरिक के तौर पर भी आप अपनी जिम्मेदारी को और बखूबी निभा सकते हैं, इसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर रिकी ने हमें दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। इसी के साथ इस खास मुलाकात में इतना ही। आगे भी आपके साथ इसी तरह से हम एक से बढ़कर एक कलाकारों को मुखातिब कराते रहेंगे। तो यकीनन छोटे छोटे कदमों से भी हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण को अब गंभीरता से लेते हुए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।